Streaming. Okay. Hello, everyone. Sorry for delay. हाँ, अर्ली मॉर्निंग ये सारी चीजें हैंडल करना दैट इज समथिंग जो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. आई एम नॉट वेरी टेक फ्रेंडली पर्सन, बट फायरवॉल एंड समथिंग लाइक दिस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करता है. खैर ठीक है. हाय रिश्वना, गुड मॉर्निंग. आई एम बैक. राइट. यस. सी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सिस्टम, तो थोड़ा सा कभी ऐसा हो तो थोड़ा इंतजार करें और उसके बाद फिर आप अपनी उम्मीदें छोड़ें. खैर ठीक है. विदाउट अ डिले लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज. कल की सोशल मीडिया के बहस पे नहीं जाएंगे, अपन सीधे न्यूज पे जाते हैं. सो दैट इज वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट. राइट. It's more over like drama now. I mean, the Trump is playing with the economy. He's doing insider trading. He's asking for 5 days delay. Then he's asking for 15-point agenda for the peace. Iran is rejecting. Iran is like, we are giving you 5-point agenda to go with that, and lots of different things. Right? तो ये वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है. Then there was a plea against the Vande Mataram, not against the Vande Mataram. राइट. एडवाइजरी जो जारी की है उसके लिए एक प्ली लगाई गई थी. राइट. एडवाइजरी केस में. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड अभी रिसेंटली वंदे मातरम के कुछ 150 इयर्स हुए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गो फॉर the debate on it. So yes, Bengal election was there, is there. So एक debate हुई है. Debate के बाद there is a new advisory that is being released by the central government on Vande Mataram. So there was a plea to ask from Supreme Court ki whether the advisory on Vande Mataram violates fundamental right or not. Right. So, court ने कुछ specific observation किए. I read the judgment bit, and I discussed it with one of my friend. Right, he's a lawyer. So उनका सीधा कहना है कि advisory doesn't mean the mandatory enforcement. Right. Court simply observe that the advisory doesn't mean the mandatory enforcement. There is no punishment, no violation act, right? And petition term is premature. So जो petition है वो premature है. They strictly mention about the Article 19(1)(a), the freedom of expression and speech, Article 21 about the personal liberty, and Article 51(a) about the respect of national symbol. Right? सो उन्होंने सीधे तौर पे ये बातें जो हैं इनके अंदर ये डिस्कशन करके बोला कि एडवाइजरी मैंडेटरी इन्फोर्समेंट नहीं होता है. देयर इज नो पनिशमेंट. देन ही टॉक अबाउट द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग. राइट. सो नेशनल एंथम के लिए उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि दिस इज लीगली प्रोटेक्टेड. राइट. व्हाइल नेशनल सॉन्ग इज अ सिंबॉलिक. राइट. एंड नॉट इन्फोर्सेबल. ओके. सो जजमेंट जो कोर्ट है उन्होंने सीधे तौर पे इस प्ली को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो हमारे पास आज का टॉपिक था. उसमें फॉर नाउ देयर इज अ स्कीम नोन एज उड़ान. राइट. यस. उड़े देश का आम नागरिक. सो इट्स गोइंग इनटू द नेक्स्ट पर्टिकुलर फेज. सो ये भी एक न्यूज थी. फिर जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है, हाय तो आरबीआई की तरफ से जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है उसको भी गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर नॉर्म्स, गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर टारगेट्स हैं वो 4 ± 2% के अराउंड रखने का मन है टिल 2031. राइट. यस. टू अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई दे स्ट्रिक्टली मेंशन दैट वी आर गोइंग टू curve the inflation from 4 ± 2%. So that means कि 4 से 2 ज्यादा that is 6 and 2 कम that is 2. इसके बीच में फ्लक्चुएट होगा ये. Getting. So ये था. और उसके बाद we got some LPG and fuel panic news. Yes, so yesterday जो particular LPG and fuel panic news थी उसको properly address किया गया from the government. Right. So Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, and there are several states where the newses and the videos are coming where people are sitting in a queue in a petrol pump. Right. They are not getting gases. There are restaurants which are getting closed. Right, due to the shortage of LPGs and other things. So the government has strictly clarified that there is no shortage for us. There are fuel that is coming from diverse sources. रशिया से न्यूज आई है, ईरान से न्यूज आई है कि फ्यूल आ रहा है and they are going to be here soon. And apart from this, they also mention about how the depot and the filling transition happened.
सो जो फ्यूल डिपो है वहां पे फ्यूल अवेलेबल है, राइट, एंड वहां से जो फिलिंग होती है पेट्रोल पंप्स की, राइट, वहां तक जाने में जो टाइम लगता है, देयर इज अ गैप, उस टाइम पे ये वीडियोस और पैनिक जो है वो क्रिएट होते हैं। तो लोगों को सिंपली गवर्नमेंट ने यही बोला है, यू डोंट नीड टू पैनिक, बस टेक इट ऑन अ सिंपल वे, कि हाँ भाई जब हम जाएंगे तो हमें फ्यूल मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आफ्टर सम टाइम यू कैन गेट द फ्यूल, गेटिंग। सो उन्होंने सिंपल से तौर पे ये सारी चीजें कल निकाल के दे दी हैं। और फिर देर इज अनदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि कांग्रेस को एक नोटिस मिला है, कांग्रेस पार्टी को, कि जो उनका 24 अकबर रोड का वो है, क्या कहना चाहिए, हेडक्वार्टर है, राइट, उसको वैकेट करा, उसको खाली कराने के ऑर्डर दिए गए, नोटिस दिए गए हैं। देर आर रीजनल इलेक्शंस और उसके बीच में ये चीज होना, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेप लगता है, राइट, एंड उसके अलावा देर इज अ डिबेट, देर वाज अ डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन द वुमेन रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन डिले जो है, दैट इज समथिंग जिसको ऑपोजिशन क्वेश्चन पूछ रही है कि व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल. Right. This is the bill which was passed during the special session in 2023 before the election, sorry, general election. Right. तो गवर्नमेंट कांग्रेस जो है उसको क्वेश्चन कर रही है, बट स्टिल देयर इज एन आंसर टू बी गिवन, राइट. And apart from this, there's a news which I wanted to discuss is India is aiming for 60% non-fossil fuel power source by the 2035. So by the 2035, India, after this particular crisis, has targeted that we are going to get 60% of our fuel capacity or power capacity from the non-fossil fuel. So कोल के अलावा डीजल, नेचुरल गैस, इन सारी चीजों को अलग करके we are going to produce 60% of our power with the non-fossil fuel. That is what we decided. Now let's come to the most important one. आज दो चीजें जो हैं वो डिस्कस करना, एक तो पुरानी है which we were like delaying because of some seriousness. For example, नासिक का जो केस था, right? There were videos circulating, there were news circulating where there people used to say कि भैया this is an AI generated video. But now we have confirmed, we have FIR, we have government, the administration getting in proper FIR. We got victims who have been cheated by that particular Kharat person, right? So we have the news, we have the information. We will discuss about it. So first start करते हैं रेगुलर वाले उससे, that is West Asia, right? Don't get bored, guys. I know every day there is the same thing. So, as of 26th of March, that is today, this particular conflict is at the 27th day, right? And diplomatic efforts for the settlement between the Iran and US, they are into some kind of pipeline. But still, कोई अभी तक एक concrete हमें वो नहीं मिला है. Let's discuss the diplomatic deadlock जो अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट, एंड बिकॉज ऑफ द ईगोस, है ना, कल यस एक एक्सपर्ट है जिन्होंने ये बात बोली कि दिस इज द डिप्लोमेटिक डेडलॉक ऑफ ईगोस. आई मीन द Iranians are in ego because the Americans and Israeli kill their supreme leaders and other leaders. They are not ready to compromise. The Americans are in ego because they are Americans. एंड Israelis are in ego क्योंकि वो इलेक्शन नहीं हारना चाहता बेंजामिन नेतन्याहू, राइट. तो ईगो को क्लैश जो है वो एक डेडलॉक का रीजन बना हुआ है. सो आई गो स्टेप बाय स्टेप. सो यूएस 15 पॉइंट प्लान, राइट, डोंट लाफ व्हेन I'll tell you the conditions. हाई विशेस. सो यूएस 15 पॉइंट प्लान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, okay, to the Iran, and Iran instantly dismissed the US proposed 15-point ceasefire plan as maximalist and unreasonable. Right. Sure, but just wait for like session end. फिर अपन डिस्कस करते हैं. I mean, who is going to accept the US term? They are saying, oh, it's okay, completely fine. You have enriched 90% pure uranium. That's completely fine. We don't have any problem with that. But hand over that particular uranium to us. I mean, हमने uranium enrich किया है और तुम कह रहे हो कि we should hand over that uranium to you. Right, and you do not attack on any of the country, and we are not giving you any written particular thing that in future we are not going to attack. Iran was like कि चाचा ये पेपर पकड़ो बाहर जाओ उसे पोहे खाओ घर जाओ, right? Yes. On the Iran, on the other half, Iran
has given the counter conditions, right, which was a 5 point demand. Okay, so the 5 point demand of Iran looks more reasonable than US 15 point plan. उनका सीधा कहना था formal recognition of Iranian control over the Strait of Hormuz. इस पे एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे सबसे ज्यादा मैं डिबेट करूंगा, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ नेचुरल रिसोर्स, राइट, इट कैन नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, बट जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और सी लॉज हैं उसके हिसाब से दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द क्लोजेस्ट टू इज क्लोजेस्ट टू द ईरान. सो एक फॉर्मल कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज समथिंग जो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, डोमिनेटिंग स्टेप है, राइट. इंस्टीड ऑफ दैट अगर उनका ये कहना होता कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तो दैट इज समथिंग जो डिफरेंट होता, राइट. सेकंड, compensation during the damage occurred in this particular war. So उन्होंने compensation जो है उसकी डिमांड की है. They said कि we were involved into the peace, right? We were discussing the peace term, and suddenly out of nowhere you attacked on us, and that is something which is the violation of the rule of peace talk. So whatever damages we have faced, you have to what we can say, like जो उसका compensation है, you have to give that. Yet, apart from this, they said that the formal sanction, especially the secondary sanctions on Iran, that should be relieved. Right? They said that there should be a written guarantee that there is going to be no further escalation on the Iran, or there is no further attack going to be on Iran. And the last one, the US military bases located in Middle East, they are supposed to be vacated. There is supposed to be no military presence of any other nation in Middle East. राइट, तो उनका कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर डिमांड जो है लॉजिकल है. Though there is a very few percent of chance that Americans are going to accept it, and this is something जो कि problem है. I mean, this if this war continues for another 1 month, सच में भैया फ्यूल और बाकी चीजों की क्राइसिस हो जाने हैं, राइट. तो डेफिनेटली वी वांट दैट. नाउ यूएस की तरफ से जो पर्टिकुलर आफ्टर दिस पर्टिकुलर 5 point डिमांड, यूएस की तरफ से द व्हाइट हाउस वार्नड ईरान to accept the defeat or face even harder military strike. The President Trump stating that he is prepared to unleash the hell if negotiation fails. ये अगेन डोनाल्ड ट्रंप का सुबह का टाइम था. सुबह ही डिड सम काइंड ऑफ नशा, सस्ते नशे, राइट, एंड ही सेड कि वी आर गोइंग टू डू दिस. और फिर कुछ देर बाद जो है वो वही हुआ जो होना था. Pakistan remains a primary intermediary, having transmitted the US proposal to Tehran. Egypt and Turkey are also reportedly involved into de-escalation effort. So, at one side, the Trump is saying we are going to unleash the hell on you. Other side, they are asking Pakistan's military general Asim Munir to talk to Iran and make sure कि negotiation हो जाए. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है. कल एक जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है उन्होंने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान अ टेररिस्ट नेशन, a nation that actually holds basis for the terrorism and terrorist activity, it is mediating peace, right, while India, right, one of the most democratic, one of the most non-aligned nation, is playing a zero role in the discussion and mediation. That is somehow a loss to India's foreign diplomacy and a diplomacy that is that make projection of Pakistan as a terrorist state. अगर पाकिस्तान peace कराने लगा, which is actually holding the terrorists के क्या कहते हैं मतलब पीस टॉक करा रहा है जो टेररिस्ट नेशन है, तो दैट इज समथिंग जो क्वेश्चनेबल होगा. गोबर के उपले सुप्रीमेसी, आई गेस यू आर करेक्ट. सुबह सुबह गोबर के उपलों का ही नशा करके आता है ये ट्रम्प, राइट. सो ये मीडिएशन के जो एफर्ट्स हैं ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहे हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. पाकिस्तान, जनरल मुनीर, if they are able to stop this particular war, the conflict, then we are going to be thankful. हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा है, राइट, हमारा लड़का है, हमें पता है कैसा है, ठीक है. बट इफ द वॉर इज डी एस्केलेटेड एंड लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, द प्राइस एंड अदर थिंग्स आर ऑन स्टेबल स्टेट, देन डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, राइट. अभी ये while the discussion of diplomatic solutions are going on, military strikes are continue, है ना. यस, मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं रुक रही है, स्पेशली फ्रॉम द ईरान साइड. So US Israel forces continue to conduct air campaign targeting Iranian missile infrastructure and production site, particularly in the Afghan province.
राइट। इस्फहान जो प्रोविंस है वहां पे उन्होंने अटैक किए। एंड देन Iranian missile and drone have continued to target the central and northern Israel, including a reported strike near Haifa and the Negev desert. So ये इधर से अटैक कर रहा है, कह रहा है कि हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मांग रहे हैं, वो उधर से 5 पॉइंट एजेंडा दे रहा है, वो उधर से मिसाइल वो कर रहा है, और ये कंटिन्यू चल रही है। देयर इज अ बिग न्यूज दैट इज कमिंग अबाउट द यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, है ना। देर आर समथिंग, दो टाइप की न्यूज मैंने कल पढ़ी है, एंड आई गॉट वन ऑफ द न्यूज फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम इट वेल इट एज वेल। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो टेक्निकली मतलब बाद में तो ये चीज हटा दी गई थी, बट न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का माउथ पीस है। तो उनका ये कहना था द सोल्जर्स आर नॉट विलिंग टू गो टू वॉर अगेंस्ट ईरान बिकॉज दैट्स नॉट देयर वॉर, बट बाद में वो चीज हटाई। सो Pentagon is reportedly preparing to deploy thousands of elite 82nd Airborne Division troops to the Middle East, signaling a possible shift from air-only campaign to potential ground invasion. So Pentagon की जो sources हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि we are going to do dual invasion, one from air, another from the ground. अब जो वो है क्या कहना चाहिए, लेबनान है, लेबनान में, सदर्न लेबनान में इसराइली has captured the huge amount of land and they have established the security zone, right, to protect the Israeli interest against the Hezbollah from the Lebanon, right। तो उन्होंने उसको सिक्योरिटी जोन बना लिया है एंड उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। सो टेक्निकली दे कैप्चर्ड द सदर्न लेबनान आफ्टर द अटैक, आफ्टर द इन्वेजन। Now, casualties are continuous. Economic impact is something जिस पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, राइट। मंडे मार्केट खुलने के पहले, लाइक मंडे अमेरिकन मार्केट खुलने के पहले, यूएस मार्केट्स, राइट, द डोनाल्ड ट्रम्प has like just few minutes before the market was opening, Donald Trump put a status as a tweet that there is going to be no escalation for next 5 days, and we are in the discussion with the top Iranian official, जिसके साथ हम पीस का डिस्कशन कर रहे हैं। When this happened, the market actually stabilizes, and there were news of lots of insider trading. Now, what is insider trading? मैं इसको simply समझाता हूँ. For example, let's say I worked with the president, है ना? I worked in White House, and White House में there is a discussion going on that there is going to be war, but we are going to say this is stabilize the market. Or if I'm working with a large company, very big firm, जहाँ पे इस टाइप के क्या कहते हैं कुछ ऐसे ट्रांजिशन चल रहे हैं कंपनी में कि दिस इज गोइंग टू बी acquired by some other company, or it is going to be sold to another company, or इसका IPO आने वाला है. So I can, being insider, I know the information and I can buy the stocks, or I can tell other people to buy the stock because I know after the acquisition this company is going to be more profitable and huge. So this is something to information inside से आए और उसके basis पे market में trading हो. That is something is known as inside trading, right? The huge amount of inside trading has been seen on the Monday as the Donald Trump put the tweet or the in the Truth Social about the ceasefire, the peace talk, and 5 days non-escalation. राइट। तो यूएस मार्केट थोड़ा बहुत तो स्टैब्लिश हुआ, थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ, बट इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज बहुत आ रही है। देयर आर रिपोर्ट्स लाइक रिपोर्टेडली सम $600 million हैव बीन गेन, एंड अनडाउटली जो अमीर लोग होते हैं उनका वॉर में बहुत प्रॉफिट होता है, राइट। देयर आर पुअर हु सफर्स इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, सो दे आर एक्चुअली यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेक्निक टेक्टिक्स कि जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। सो ट्रम्प एंड ट्रम्प्स फैमिली एक्चुअली मेड अप्रोक्सीमेट $1 billion आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वन डे मार्केट, ऐसा न्यूज में आ रहा है, राइट। तो दैट इज व्हाट समथिंग दैट हैपेंड तो अमेरिका एंड ट्रम्प, because people are strictly saying that Trump is not going to get a new particular what we can say term, क्योंकि दो ही बार बन सकते हैं यूएस में प्रेसिडेंट। सो ही इज यूजिंग वॉर फॉर हिज फंडिंग, हिज एंड हिज फैमिलीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, राइट। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को वो कर रही है, क्या कहते हैं, उनको यूज कर रहे हैं वॉर को, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके, राइट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसका, नासिक का खरात केस का, राइट। दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन, the things he did. Ashok Kumar Kharat, a 67-year-old retired merchant navy officer, self-styled godman, astrologer, uh,
वो क्या जो नंबर पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, राइट, he allegedly known as a captain, right, he was involved into the sexual assault of the multiple women, assault, blackmailing, uh, in natural practice, filth practice, a lot of things. Right. So finally, we got something concrete on him. So हम ये डिस्कस करना चाहते थे. So first of all, जो minor updates हैं मैं उनकी बता दूं. FIR is being registered by 8 different women. Right? Yes. So he's not coming out of the jail for sure. Apart from this, there is an SIT that is being established by the Maharashtra government to investigate all these particular thing against Ashok Khairat, जो भी है वो. The reason behind this case is a huge, and there is a no media discussion on it because he was having a good political connection. I mean, Deputy CM of Maharashtra, Ashok Shinde, Ignash Shinde, he was also, I guess, he conducted a puja in his house by him. There were lots of political leaders from Congress, BJP, शिव सेना, उद्धव शिव सेना, एकनाथ शिंदे, जो उसके रेगुलर टच में रहे हैं, एंड ही परफॉर्म्ड पूजास, ही परफॉर्म्ड वर्शिप रिचुअल्स इन देयर हाउसेस. सो टेक्निकली जो मीडिया में नहीं आने के पीछे का रीजन है, दैट इज दिस. अब अब धीरे धीरे जो इन्वेस्टिगेशन है, जो चार्जेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं. सो खरात वाज अरेस्टेड ऑन द 18th of March following a complaint by 35-year-old woman. He faces charge under the Bharati Nyaya Sanhita and Maharashtra Prevention of Eradication of Human Sacrifice and Other Inhuman Evil Aghori Practices and Black Magic Act 2013. मतलब ये जो नेता लोग हैं जिन्होंने उसके साथ फोटो खिंचाई है, 2013 में जब वो एक्ट जो है पास हुआ था, राइट, तो सम ऑफ देम वर देयर टू वोट फॉर इट कि हाँ ये एक्ट पास होना चाहिए. ब्लैक मैजिक, अगोरी प्रैक्टिसेस, other evil things are not at all allowed in Maharashtra. And even after though they invited him in their home for winning election puja, right? So that is what it is happening. So उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर महिला ने चाकू लगाए थे, एंड उसके बाद 8 different women came out. Yes, he did blackmailing and sexual assault on us. अब जो उसका मोडस ऑपरेंडाई था उसकी बात करें तो सबसे पहले ही यूज्ड फियर टैक्टिक्स. क्या यूज करता था? फियर टैक्टिक्स. He allegedly used fear based predictions such as telling women that their husband life is in danger. To get out of it, you have to go for purification rituals. Manipulation and drugs. Victim alleged that he used intoxication, hypnosis, and even a CD-like mobile app to stimulate a divine voice to gain their trust and to exploit them. So भाई टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहा था, है ना? And apart from this, the stage occult scenes, investigators found that that he used fake props, including plastic snakes, tiger skin, patterned fabric to create a frightening atmosphere during the rituals, so that the victim associated with them go according to him. राइट. सो भाई इस आदमी ने साइकोलॉजिकल सारे के सारे टैक्टिक्स यूज किए महिलाओं को क्या करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए. राइट. ही इज वन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन विच एक्चुअली कैन बिकम an example, right? So that people should not like get involved into such kind of thing. I mean, the videos we are getting. One of my friend is investigating on it. He's a journalist in Pune, Manasik जाके वो investigation कर रहा है. So the video he is getting, he is telling कि भाई, not only common people, but extraordinary businessmen, politicians, local politicians, ऐसे वीडियोस और ऐसे पर्टिकुलर डिस्कशन आ रहे हैं कि देयर women, their wives and their daughters are being exploited by this person. So there is a kind of thing, इसको तुम कह सकते हो ब्लाइंड फेथ. सो हमें कहीं ना कहीं इससे एक एग्जांपल मिलता है कि वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू दीज थिंग. अब बात करें लाइक द रिलीजन, है ना? सो मेरा रिलीजन हिंदुज्म है, एंड हिंदुज्म में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई तू कर्म अच्छे कर, फल की चिंता छोड़ दे. सब कुछ जो हो रहा है वो उन्होंने लिखा है. So the thing is कि अगर मैं if I'll work hard, definitely I can get out of any hard situation. But if I'll get involved into the बाबा, तांत्रिक, black magic, definitely मेरा कुछ नहीं होना जाना. खैर, एविडेंस जो है उनकी बात कर लेते हैं.
So एविडेंस में सबसे पहला और मेन एविडेंस जो था दैट वाज द वीडियो फुटेजेस, राइट? यस. So police seized a pen drive containing at least 58 obscene video clips of different women, which he reportedly used for blackmailing. So 58 women, different 58 women's के videos उसके पास थे blackmail करने के लिए, right? Then they recovered a weapon and cash, right? A pistol and 21 live cartridges and 6.5 lakh cash were recovered from his residence and farmhouse. And one dead cartridges were also there. The police is suspecting that one dead cartridge is something to which he performed human sacrifice. Now, ये तो चलो ठीक है. अब इस ढोंगी बाबा, फेक गॉडमैन की अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं, एसेट्स की बात करूं, right? He is having an asset of 200 crores, which is illegal and illegally pata nahi. So Kharat is estimated to have amassed an illegal empire, right, worth of lot of crore, hundreds of crore, while 200 crore looks legit, including luxury flats, marriage halls, vast land holding, etc. So मतलब पुणे सॉरी नासिक में ही मेरे दोस्त ने बताया उसके पास अप्रोक्सीमेट 70 एकड़ लैंड है. यस, जलवा है ना. Special investigation led by IPS Tejaswini Satpute has been formed to identify more potential victims and investigate wider pattern of crimes, including potential human sacrifice, murder linked to the recovered weapon. तो अभी एसआईटी जो है वो कंटिन्यू काम चल रही है, राइट, कर रही है. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी इस आदमी को फांसी की सजा होने. I mean, the police recovered 58 different women's video, right? Just for one reason, so that he can blackmail them. Getting my point? Right? That is how the things are. अब बात करते हैं जो सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है उसकी बात करते हैं. तो द केस ट्रिगर्ड रो इन महाराष्ट्र ड्यू टू खराज allied ties with the various political leaders. Photographs, videos are surfacing at different social media platforms with the prominent figures of Maharashtra, political leaders at his Sri Ishaneshwar Mahadev Temple Trust. Right, तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो हो ही रही है. SIT is also questioning the temple priest and watchman as part of a deepening probe. Multiple victims since his arrest. At least 7 FIR has been registered. Right, मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ कि there are 8 FIR जो मुझे recent वो मिली हुई है. तो 8 women हैं जिन्होंने FIR रजिस्टर कराया है. And more women are in like coming out, including former employees and their family members have come forward with the complaints. So it's a good thing कि जल्दी लोग इस particular गधे के fear से बाहर आ रहे हैं. And चलो, before we move to the conclusion part, I'll tell you one thing. Touchwood, I had good mentors from all the religion. Every single religious practices were based on karmas, whether that is Islam, Hinduism, Sikhism, Buddhism, Jainism, Parsi, or anyone. All of them talk about do good work, good thing, right? Don't get involved into such kind of thing. So अभी there is a problem. मैं अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था. How India and China were in a race, and suddenly China get ahead of very ahead of India because of loss of scientific temper. इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर की बहुत कमी है. People do not talk about anything scientific. If something is questioned, which is a regular practice, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है. चाइना में ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दिस गाय अशोक खरात, ही यूज टू सेल इमली होती है, दैट इज अ सीड. इमली के सीड्स को वो पावर स्टोन बना के लोगों को लाखों रुपए में बेचता था. एंड nobody actually questioned that whether this is a stone or not. राइट. सो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इंडिया में इन जैसे बाबाओं की बहुत ज्यादा दुकानें चल रही है. इट्स नॉट लाइक कि देयर इज रॉन्ग इन सम फेथ, बट द प्रॉब्लम इज द ब्लाइंड faith is something which is not at all welcoming. So from being my side, if you are into any kind of negative thing, negative time, do work hard, believe in yourself. Do not go to any of these particular shit person. कोई भी बाबा जो भविष्य बता रहा हो, भूत बता रहा हो,
या जादू दिखा रहा हो, या कोई रिचुअल करके तुम्हें अमीर बना दे या स्ट्रांग बना दे या इलेक्शन जितवा दे, दैट इज ऑल फेक, राइट? किसी में भी भगवान बनने का दम नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, आस्क क्वेश्चन, राइट? दैट इज व्हाट इज important. The blind faith is something which is the reason why we are discussing this in human case. Getting? चलो, तो अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। Tehran dismissed US attempt to end the conflict, sets on its own term. Government defended stand against the opposition, raises the Pakistan on role in Iran. मैंने बोला था कि दिस इज समथिंग जो प्रॉब्लमेटिक है। अगर पाकिस्तान पीस कराएगा तो हम फिर वो लोगों को कैसे बताएंगे दुनिया को कि इट इज अ टेररिस्ट स्टेट। ठीक है। इंडिया इज एमिंग फॉर 60% नॉन फ्यूल फॉसिल फ्यूल पावर सोर्स बाय द 2035। ये अपन बात कर चुके हैं। उड़ान स्कीम की बात कर चुके हैं कि वो नेक्स्ट फेज में जा चुकी है। बीजेपी, अच्छा ये दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा अच्छा वो है, जिस मतलब अच्छा तो नहीं है, आई डोंट वांटेड इट, बट ठीक है। सो आजिकार मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर देयर वाज गैंग रेप इन विच वन ऑफ द डॉक्टर डाइड, right? And the mother of that doctor is now the BJP candidate from the Panihati constituency. So Panihati constituency से बीजेपी ने जो विक्टिम थी उनकी जो मदर है, आजगर मेडिकल कॉलेज की जो विक्टिम थी, उनको क्या बनाया है, कैंडिडेट बनाया है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए था, मतलब पॉलिटिसाइज, बस ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Long queues in pumps in MP, state minister denies the fuel shortage. See, day before yesterday, there was shortage. मैंने शाम को 2-3 पेट्रोल पंप विजिट किए. I had fuel, but I just wanted to see whether they are operating or not. But yesterday, I saw a 50-50% thing. So I visited 5-7 petrol pump when I was wandering around, and there were 3-4 which were completely closed, and there were 3-4 which were giving petrol, and there were long queue, but they were giving fuel, right? So the thing is कि there are fuel, but again there is no shortage, but वो जो डिपो से लेके एंड फ्यूल पंप तक आने का है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट? सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी हम ये भी वो कर सकें। So LPG shortage affected the students preparing for government jobs in Patna. Kaveri Basin faces dry spell unit until the 2050 study says. Yes, अगर इसी रेट से कावेरी जो है वो डिक्लाइन होती रही, वाटर लेवल एंड ड्राई होती रही, so from 2026 to 2050 it's going to be completely dry. Kaveri river. Vande Mataram advisory, we have discussed about it already, right? फिर election. Transgender bill receives RS Rajya Sabha approval amid uproar. We discuss about the Transgender Person Protection of Right Act 2026, in which there are certain changes. There are activist NGOs which are protesting against it. And there is a being challenge in Supreme Court against that Nalsa versus Union of India 2014 case. But अब वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, राइट? चलो, नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल, अ फ्लॉड फिक्स, ये एक बार पढ़ लेना। he actually Gopi Shankar Mudrai actually mentioned about the what we can say, how this particular bill or act is flawed, right? Cuban sorrow, the problem with Cuba is rising the energy issues and other thing, right? So this is about that. एंड ये पढ़ लेना, एनर्जी ट्रांजिशन ड्रिवन बाय द एथिक्स। ये भी अच्छा था कि फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल के अलावा हम क्या कर सकते हैं और क्यों वो ज्यादा बढ़िया है। द रूरल तेलंगाना's verdict on Congress, BRS and BJP. India said to have bought Iran LPG after US eased sanctions. I told you there are news that India is buying the Russian oil, the Iranian oil, right? Iranian fuel supply after the sanction is being released. So our government is working hard. Let's hope for the best कि इतनी बुरी situation ना आए जितनी अपन ने कोविड के टाइम पे देखी थी। Yes, the situation is a bit critical, but the government also needs to win the election, no? So they are really working hard. फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सेंटर के राइट टू लिवी सेस जो है उसको डिफेंड किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सेस बढ़ाना घटाना।
क्या टैक्सेस हैं। आप ये पेपर कब पढ़ लेते हो? मैं सुबह 6 बजे से पेपर पढ़ता हूँ तो हिंद। Trump rescheduling his Beijing visit May amid the West Asia conflict. So ट्रम्प का अभी जो चाइना है, चाइना का एक पर्टिकुलर कनेक्शन है इस वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में. China is a good supporter. China is a regular supporter of Iran because there is a huge amount of fuel supply that's come from Iran to the China, right? And Iranians are also allowing other ships to pay in yuan for the fuel and other thing, right? So overall fashion में this particular Chinese visit of American president was supposed to be happened early, but कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का दूर जाना ये बताता है कि why US is ready to deploy thousands of elite troops to the West Asia. So experts are saying कि China visit करके Donald Trump could have asked Chinese president to ask Iran to move forward for the negotiation, right? But the thing is कि because of this delay ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा क्या हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, जो डिस्कशन है जो डिबेट है. तो ये भी एक वो है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी हो. न्यू स्ट्राइक्स बात कर चुके हैं. यूएन डेजिग्नेशन डेजिग्नेट अफ्रीका स्लेव ट्रेड एज द ग्रेवेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. This happened in past, है ना. Undoubtedly, I'm not justifying that African slave is not a gravest crime. This happened in past. There is a recent what we can say uh, massacre that is going on between Iran and Israel. Right? They are not worrying about it. United Nation, typical United Nation. North Korean Kims vow stronger ties and unshakable support to Russia. मैं भी खेलेगा वाला सीन है. Israel continues to pound Lebanon, हम बात कर चुके हैं. ईरान वॉर टेस्ट यूरोपियन यूनिटी amid the German economic slumps and Ukrainian war. ये एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है. ये बताता है कि किस तरीके से यूएसए, नेटो, राइट, एंड अदर पर्टिकुलर जो वो हुए हैं, क्या कहना चाहिए, अभी रिसेंट क्राइसिस हुए हैं उसमें किस तरीके से चीजें सेटल हुई हैं और उनकी यूनिटी टेस्ट हुई. इसको पढ़ लेना, बहुत प्यारा आर्टिकल. यूक्रेन ड्रोन मैन्युफैक्चरर फ्लडेड विद द वेस्ट इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर द इक्विपमेंट. भाई वॉर के बीच में इनको ना वेस्टर्न एशियन जो है उनसे रिक्वेस्ट आ रही इक्विपमेंट के लिए, देख लो. खैर, दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज, राइट. Yes, I'll see you in the next session, this particular discussion. Again, I have a simple request कि कभी ऐसा हो कि 2-4 मिनट अगर लेट हो तो प्लीज डोंट लूज होप. कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी यार. आई एम नॉट अ वेरी टेक फ्रेंडली गाय, बट आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर दूं. So this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करें, पढ़ाई में मस्त रहें, सॉरी लाइफ में मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें. Good day guys. See ya.